Hello everyone, this is Aditya Prajapati and I come from a very humble background. I come from Blaze area and even then I am able to speak very well English because I practiced a lot. I had given too much time for learning this language. Only because of this reason I am able to speak very well English, and I am going to tell in this video that you just have to watch one movie that is really interesting and you will learn a lot through watching this movie. This is Romeo and Juliet. This is the love story of Romeo and Juliet. They used to love a lot each other, so this movie is designed for them. This movie is totally devoted for Romeo and Juliet. So I have watched this movie. This is really interesting स्टोरी एंड बहुत ही अच्छे से इस मूवी को शूट किया गया है. आप देखेंगे बहुत सारी चीजें लर्न करेंगे. यू विल डेफिनेटली हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू लाइक समथिंग फ्रॉम दिस मूवी. सो गाइज वॉच दिस मूवी. आई वांट टू गिव यू अ क्लिप, सो वॉच. Juliet! Nurse, come on! Juliet! Guys, this is how they are talking. So you will definitely be able to understand. This is available in free on YouTube. You will be able to watch from YouTube. You don't have to take a subscription. You don't have to search on Telegram or Google. You just have to watch from YouTube. It is available with the subtitles. You just have to watch this movie with the subtitles. If you'll watch this movie with the subtitles, this is 3 hours movie. If you'll watch it, you will learn a lot. क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से बोलते हैं. They talk in a very simple manner. और बहुत सारी चीजें आपको लर्न करने को मिलेंगी. जो आपको अच्छा फ्रेज लगता है, जो भी आपको सेंटेंसेस अच्छे लगते हैं वो बोलते हैं. तो प्लीज उसका स्क्रीनशॉट लीजिए. इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट सेंटेंस, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आफ्टर दैट you just have to Google for that screenshot. You just have to understand what is the Hindi meaning of that sentence. If you like that expression while watching a movie, जैसे आप जो मूवी देखकर सीखेंगे, जो आप इमोशंस आपके अंदर आने चाहिए. यदि इमोशंस आ गए इंग्लिश में ही, आप समझ पा रहे हैं कि कब वहां पर हंसी आ रही है मूवी में, इंग्लिश मूवी वॉच करते समय कब उदासी है, कब हंसी आ रही है, कब हमें रोमांटिक फील हो रहा है. तो इस तरीके से आप यदि इमोशनल हो रहे हैं व्हाइल वॉचिंग इंग्लिश मूवीज, सो यू आर लर्निंग अ लॉट. क्योंकि फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज हम इमोशनल नहीं होते हैं, हम जस्ट लर्न करते जाते हैं. और इमोशनल जब होते हैं तो हम उस लैंग्वेज में घुल मिल जाते हैं और ये लर्न करना बहुत ही आसान हो जाता है. तो मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि प्लीज स्टार्ट वॉचिंग मूवीज. डिफरेंट इंग्लिश मूवीज आर अवेलेबल ऑन YouTube. If you have liked something, so you just have to take a screenshot of that movie, and after that you just have to translate from Google Translate and understand what is he or she saying about. तो आपको वो understand करना है. यदि आपको वो sentence अच्छा लगता है, you just have to use in your everyday life so that you can learn this language very soon, very fast. So this is the way for learning this language. This is very well way to learn anything. If you want to be fluent, if you want to speak very well English, so you just have to apply this thing. This helped me a lot when I used to watch movies, vlogs. So whatever the things I used to like, whatever the expressions I used to like, I just used to take a screenshot so that I can use that sentence in my life. जैसे कि मैंने एक 12 Years a Slave movie देखी थी. When I watched 12 Years a Slave movie, so I just liked a sentence that was please help him to his feet. उसने ऐसा बोला तो मुझे यार अच्छा लगा, क्योंकि आई कुड नॉट मेक दैट सेंटेंस एवर. मैं यदि ट्राई करता ऐसे सेंटेंस बनाने का तो मैं कभी नहीं बना पाता. वो केवल इमोशन से ही आता है. और अब आप इंग्लिश मूवीज देखोगे, ओरिजिनल इंग्लिश मूवीज, तो आपको वो पता चलेगा. जिसका मतलब होता है कि कृपया उसकी सहायता करिए खड़े होने में उसके पैरों पर.
उसके पैरों पर खड़े होने में उसकी सहायता करिए। जैसे हम बोलते हैं कि प्लीज मुझे मेरे हाथ पकड़ के मुझे खड़ा करिए, तो आप बोल सकते हैं कि प्लीज हेल्प मी टू माई फीट। सो ऐसे मैंने लर्न कर लिया ये सेंटेंस, तो आई विल डेफिनेटली बी यूजिंग दिस सेंटेंस व्हेन आई हैड टू डू दिस सेम थिंग। तो इस तरीके से यू जस्ट हैव टू टेक स्क्रीनशॉट्स एंड यू हैव टू यूज दो सेंटेंसेस इन योर एवरीडे लाइफ सो दैट यू कैन लर्न very much. And if you'll use these kinds of sentences in your speaking skills, so it will it will make a very good expression for your learning. This is the reality. यदि आप इस तरीके के सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत ही एडवांस हो रही है, बहुत ही एडवांस। क्योंकि हम कितना भी लर्न कर लें तो इस तरीके से सेंटेंस फिर भी हम यूज नहीं करते हैं। So this is what I wanted to talk about, that you have to watch Romeo and Juliet. This is an amazing movie. You just have to watch that movie, and you just have to watch that movie with the subtitles so that you can understand what are they saying, what are they talking about while talking. So if you will understand, if you are unable to understand some sentences, you just have to Google Translate of those sentences so that you can understand what are they saying in Hindi. तो आपको ये करना है और रोमियो एंड जूलियट देखिए। दिस इज एन अमेजिंग मूवी, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, बहुत ही अच्छे से इसको डिजाइन किया गया है। दिस इज एन अमेजिंग मूवी और बहुत ही स्लो बोलते हैं, बहुत ही अच्छा है यार। Please watch this movie. This is an amazing. You will learn a lot and you will definitely improve your English. Okay, have a good day. We'll meet in another video. Bye bye.